So welcome back to my another episode. In this video हम पार्ट 1 से रिलेटेड रेसिपीज कंटिन्यू करेंगे. So let's नुस्ता कुक. Take a bowl and add 3/4 cup of besan to it. अभी उसमें रेड चिली, some हल्दी, some salt and some chopped onions to it. Now add lots of tomatoes to it, some green chili and more tomatoes to it, some धनिया and उसमें some पानी ऐड करके उसे नुस्ता मिक्स कर लीजिए. नुस्ता मिक्स करने के बाद add some baking soda and mix it. Now take a pan, heat it, add some oil, heat it. After oil is heated, add the batter to it. अभी उसको नुस्ता स्प्रेड कर लीजिए. After spreading, add some oil to the corners of the omelette and just cover it. After 2 to 3 minutes, just unfold it. Now add some oil on the top of it and nusta flip it and add some oil more and cook it and it's ready to eat. Take a pan, heat it and add 3 spoons of oil to it. Now add some chopped garlic and nusta saute it. Now add some chilies, some onions, some capsicum and nusta stir it. Now add some tomatoes, some salt and nusta stir it. Now take two bread and nusta toast it on the one side. And now add some hot and sauce to it and nusta spread it. Now nusta add the vegetables and add some sweet corn to it and mix herbs. Now you're going to add nusta cheese to it. Now add some butter on the corners of the bread and nusta cook it for 2 minutes. After 2 minutes, it's ready to eat. So you can eat it with the bread. Ta-da! तो गर्मी के मौसम में हमें इस तरह का पापड़ मिल जाता है, उसे कुरडई कहते हैं. तो चलो इससे हम कुछ डिलीशियस सब्जी बना लेते हैं. तो इसके लिए हम 2 कुरडई लेंगे और उससे एक बॉल में पानी लेके 15 से 20 मिनट के लिए नुस्ता सोक कर लेंगे. सोक होने के बाद कुछ इस तरह की कुरडई हो जाती है हमारी. तो इसे हम चॉपिंग बोर्ड पे ट्रांसफ़र करके उसे नुस्ता रफली चॉप कर लेते हैं. तो अभी एक पैन लीजिए, उसमें सम ऑयल ऐड कर दीजिए, उसमें सम राई ऐड कर देते हैं, सम जीरा and some chopped onions to it and lastly some chopped ginger and garlic और उसे नुस्ता रफली स्टर कर लीजिए. अभी उसमें सम हल्दी, सम रेड चिली एंड इसे थोड़ा स्टर कर लीजिए. अभी उसमें सम सॉल्ट ऐड करके हमारे नूडल्स ऐड कर दीजिए और उसे नुस्ता स्टर कर लीजिए and just cook it until it gets this crispy and it's ready to eat it with chapati and tada.